sincere. A time for charity, a time for love and unity, for peace and mercy. We can do this easily. A time to see how beautiful Islam can be. Thanks to peace and mercy, we can do this easily. Ya Shahran Kareem, kam anta azim, Ramadan laka salam. Ya شهر الصيام Ramadan is here. Ramadan is here. Ramadan is here. Assalamu alaikum and welcome to all the listeners and viewers of Salam Radio 106.2 FM. And it's me, Erum, and Zoya, along with the show Mom and Me Radio, navigating the youth journey. Hi, my name is Zoya, and today I welcome you to Islam Radio, Mummy Me Radio, navigating the youth journey. My name is Zoya Idris, My name is Erum. and today I welcome you to Mum and Me Radio, navigating the youth journey. अच्छा जोया माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान का महीने की आमद है और आज जो है I will say 6th और 7th रमज़ान जो लोग मंडे से आगाज़ कर चुके हैं वो 7th रमज़ान सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो ट्यूसडे से स्टार्ट कर चुके हैं दे आर हैविंग द 6th रमज़ान तो आपके हवाले से नहीं आज रमज़ान के हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगी अपने लिसनर्स से व्यूअर्स से और पहले तो एक दफ़ा फिर माज़रत करूँगी कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा आज के लिए और एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप सब लोग आज मौजूद हैं हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं इस फैंटास्टिक चैनल सलाम रेडियो 106.2 पे तो आज बताइएगा जोया कि आपको कैसा लग रहा है रमज़ान में रोज़े का जो तरीका है जो एक हमारा कल्चर है जो एक सुन्ना है you know it's a fantastic month of Ramadan of all the blessings you know we all are fasting you know we like just doing ibadats and prayers you know raising our heads you know and hands for you know for the you know for Allah subhanahu wa ta'ala to bestow his almost you know rahmat on us so इसके हवाले से आप क्या बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में So today in this program, today we're going to be talking about youth and Ramadan Kareem. ये तो मैं बताना ही भूल गई कि आज टॉपिक आपने चूज़ किया है वो है यूथ एंड रमदान करीम के यूथ जो है ये जो हमारे यंग किड्स हैं जो अडल्ट्स यंग अडल्ट्स हैं हाउ दे आर सेलिब्रेटिंग रमदान और वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए तो जोया आप क्या बताएंगी अब क्या यूथ को क्या मुझसे पूछेंगी और साथ ही साथ जो एक बात मैं पहले मिस नहीं करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में हम आपसे पूछेंगे कि हाउ डिड यू हैव योर फर्स्ट रोज़ा you know when did you have your first fasting and you want to share any experience of fasting for the first time आपको याद होगा कि जब आप छोटे होंगे या उस उम्र में होंगे आपने रोज़ा रखा होगा the very first fasting of your life and what is your experience so if you want to share with us you can tell us by calling us at 01733602133 or you can drop a text through WhatsApp and that is the number you have to utilize it for is 07411191062 और अगर लाइव कमेंट्स ड्रॉप करना चाहें तो आप कर सकते हैं फेसबुक पे यूट्यूब एक्स एंड ट्विच पे तो जोया आप कहना चाह रही थी कुछ So today's topic is about youth and Ramadan Kareem. So since we picked this topic is because it's Ramadan and people it's are Ramadan. fasting and it's a month of us to start fasting and to enjoy. Yeah, enjoy Ramadan. Yeah, ibadat. अच्छा जोया ये तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये कौन सा महीना है इस्लामिक कैलेंडर का Yes, it is the ninth month. Yeah, 9th month of the Islamic calendar. Yeah. अच्छा तो इसमें पहले तो ये बताइए कि हम रोज़े क्यों रखते हैं What is the concept behind it? आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे
So we keep rosa to encourage other people, because other people don't have food. Some people, so say people that are homeless, we do it for them to know how they feel, because one of our third pillars of Islam is zakat. Zakat is when you give charity, giving charity to the poor. So poor, so if you don't understand what poor is, and your child, but the only reason I'm telling you the reason why what poor means is because sometimes people don't know what poor means. So what I understand from your conversations, Zoya, जब तक आप खुद उसे experience नहीं कर सकते, जब तक आप खुद उस भूख को, उस thirst को, उस hunger को feel नहीं कर सकते, until you don't know how other people are feeling. And I think this is one of the practice, this is a zakat of our body. Allah subhanallah, namaz, roza, hajj, zakat, or kalma tayyibah, they are the 5 pillars of Islam. And one of the fantastic pillar is fasting, som. और हम जो रोज़ा रखते हैं तो हमारा रोज़ा जो है वो हम मुत्तकी के लिए, हम तकवा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए रखते हैं, to purify our body, to intoxify our body. So just also to feel how other people, when they are not eating, they don't have food, when they are hungry, they have thirst. So how do they go through? And even we have resources, we have plenty of things in front of, but because of Allah subhanallah, we don't touch it, we don't eat it. All the halal things become haram for us during Ramadan. But like you said, aapne bahut achhi baat ki, it's fantastic that once we don't go through, our body don't go through that feeling of being without food and water, and how the people who don't have those all resources for them, for fantastic food on their table or water supply, they are deprived of that, but it's still they are fasting, and we can understand only the meaning of fasting until we feel the whole situation, the feeling of our body the other people go through, isn't that? Getting ready for the Eid celebration. Shake a lot of hands, giving salutations. So Ramadan is here and we are very happy. और मेरे ख्याल से हम सारे उम्मत मुस्लिमा जब ये रमज़ान का महीना आता है, it gives us an intense pleasure, isn't it? Yeah, because one more fact thing that I know is that shaitan is locked up during Ramadan. So when I'm fasting, I feel at least I'm doing good deeds. You read namaz when you do Ramadan. Tarawih. You do tarawih. You do charity, zakat. Yeah. खासकर हम रमज़ान के महीने में, वैसे तो सारा साल हमें ज़कात जो है वो निकालनी चाहिए, सदका करना चाहिए, फ़ितरा देना चाहिए, लेकिन ख़ासकर जब रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान के ख़ास जब इख्तिताम होता है तो फ़ितरा देते हैं, ज़कात देते हैं पूरे रमज़ान के महीने में, और हमें कहा गया है ख़ास करके हमें ज़कात जो है इस महीने में देनी चाहिए. तो हम वी आर बाउंड टू, क्योंकि हमारा जो है वो मकसद इस महीने का यही है कि हम तकवा हासिल करें, मीन्स अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करें. वी वांट टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हान अल्लाह, एंड वी वांट टू प्लीज़ ऑल द ह्यूमैनिटी अराउंड अस. क्योंकि अगर हम इंसान को खुश रखेंगे अराउंड अस, इफ़ यू वांट टू प्लीज़ पीपल अराउंड अस, देन दिस इज़ द वे टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हान अल्लाह, इज़न्ट इट ज़ोया? Yeah. अच्छा ज़ोया, तो आप कहना चाह रही थी कि मैं सोच रही थी कि रमज़ान करीम में, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है वो है यूथ एंड रमज़ान करीम, तो उसके हवाले से मैं आपसे कहना चाह रही थी कि स्कूल्स के अंदर बहुत से बच्चे, अच्छा हम ये भी पूछेंगे कि आज सब लोग अपनी कोई पहला रोज़ा शेयर करना चाहते हो कि उन्होंने पहला रोज़ा किस उम्र में रखा, एंड हाउ डिड दे फील, हाउ डिड दे गो थ्रू. लेकिन स्कूल्स में जो बच्चे आपकी उम्र के हैं और आपसे थोड़े बड़े हैं या आपसे छोटे हैं, वो सब रोज़ा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या पेरेंट्स को जो है, और क्या स्कूल्स के अंदर उसका जो है वो एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए, वो सेटलमेंट्स होनी चाहिए. तो व्हाट डू यू थिंक, आपके स्कूल में बच्चे रोज़ा रखते हैं? So when we have रोज़े in my school, जब हम रोज़े रखते हैं स्कूल में, मुझे ये adjustments चाहिए. तो for Muslims and people in the school, this can present a unique challenge, especially to the Muslims, because when you do not have any food, you do not have, because some schools, when you're fasting, you have to break your fast, because some schools say that they don't let you fast because of the okay. अच्छा,
अच्छा जोया, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे जो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, इंटरेस्टिंगली आई थिंक दे encourage our Muslim community, all the pupil and students or kids who want to, with the consent of their parents. ज़्यादातर जो स्कूल हैं हमारे पास, जितने भी हमारे कम्युनिटी में स्कूल हैं, वो पेरेंट्स की कंसेंट लेते हैं. If parents are happy to have their kids fasting, वो यकीनन उनको परमिशन देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बड़ी अच्छी अरेंजमेंट्स करते हैं. वो ये कि अगर उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या पी में हिस्सा लेना है तो उसमें जो उनका ड्यूरेशन होता है वो उसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं. यू नो, दे माइट हैव टू मेक सम चेंजेस, और इफ दे हैव टू हैव अ ब्रेक. उन बच्चों को जो फास्टिंग कर रहे हैं, इफ दे वांट टू हैव अ ब्रेक ड्यूरिंग देयर फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक पी, दे कैन हैव अ लिटिल ब्रेक एज वेल. Because for Muslims, peoples in school, this can present unique challenges, especially when it comes to physical education, which is PE activities. Exercise is very important. Exactly, exercise is very important. हमें रोज़े रखने के बाद ये बिल्कुल नहीं कहा जाता कि हम बिल्कुल चुप होकर एक तरफ बैठ जाएं और सो जाएं और बस रोज़े खोलने के वक्त हम उठ के और रोज़ा खोल लें. This is not really correct. Because exercise is very important. While during iftar and sahur, when you wake up for sahur, you have to be very energetic. But at least don't be that energetic for bedtime. But because you wake up 4 o'clock or something like that. Yeah, exactly. But don't try to be that energetic. Because when you do, then you can't be able to sleep and you won't get any more energy in the morning. Absolutely. You have to calm down your body, but at the same time you have to retrieve your own energy. Don't think that you're just eating and sleeping and that's it of the story. No. You have to go through all the routine very, in a very practical way, isn't it? आपको बड़े तरीके से अपनी ज़िंदगी एक ये अमल है ना. ये अमल आप प्रेजेंट कर रहे हैं सब लोगों को, पूरी दुनिया को, कि आप रोज़े में हैं, you're fasting, but still you're energetic, you're calm. You sometimes have to just have faith in yourself. When people eat in front of you, it's fine. So last time I was telling my mum a story at school about fasting. Yes, I know. I remember. Yeah, you were telling me a story. So I was wondering, but Mum, what if you feel sick when you're fasting and like someone eats? No, when you're not when you feel sick, but start again. Okay. So it's when ये आपकी जो मैं स्टोरी है वो मैं सुनूंगी एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद. तो आप अपनी तमाम उसको ऑर्गेनाइज करके बता सकती हैं कि आप क्या बताना चाह रही हैं. जो स्टोरी है कि जब लोग फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग का मेन जो मकसद है वो फेथ है, बिलीव, faith and belief. Yeah. So you have to be very strong. You have to be very strong to hold your fast. लेकिन ये अपनी आप स्टोरी संभाल के रखें जोया इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, ताकि मैं अच्छी तरह से सुन सकूं कि आप क्या बताना चाह रही हैं. Because all kids of your age, they're listening to you, they're watching to you as well. वो देखेंगे कि आप क्या सोच रही हैं as a child. ठीक है, तो कमर्शियल ब्रेक के बाद हम बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Stay tuned to Salam Radio after this short ad break. Whether you visit the Berry Furniture Showroom at 78B Fengate in Peterborough or view and buy online, you'll be amazed at the quality and style you could enjoy in your home. With beds from just £299 and complete 3-2-1 sofa sets from less than £1,000, you'll also be amazed at their wholesale prices too. Order during Ramadan and you'll receive a 5% discount. Plus there's a 1-year free warranty on sofas and beds, subject to conditions. Find out more, click on Berry, that's BERRE furniture.co.uk or call 01733 300 517. For the top pizza in Peterborough, visit Top's Pizza, established in 1988 for delicious pizzas with freshly made dough daily. View the extensive and mouth-watering menu online at topspizza.co.uk, then choose from traditional tasty toppings, something different, or create your own with fresh 100% halal meats, salads, veg, and a great choice of sides too. Call into Top's Pizza, 52 Broadway, PE1 1SB. Call 01733 913 775 or order online for delivery or collection. Do you own a restaurant or takeaway? Cater Fair is an expert supplier of new and used commercial catering equipment. Visit caterfair.co.uk for quality equipment on sale at the lowest prices, or call us on 01733 310 115 or visit us at 11 Royce Road, Fengate, Peterborough.
Peterborough. Who said good quality fried and grilled chicken has to be expensive? At Sam's, we take pride in every piece of chicken that leaves our kitchen. Just one bite of our chicken or burgers is all it takes to realise we are the best. Visit us at our brand new place at 333 Lincoln Road, PE1 2PF. Or order a delivery through Just Eat, Uber or Deliveroo. Sam's, the home of great tasting chicken for over 30 years. Are you a savvy shopper searching for the best food deals? Look no further. Adams Cash and Carry can help you save big. We're not just a food wholesaler for takeaways and restaurants. We also welcome household customers at our warehouse in Westwood, Peterborough. Visit our website and enjoy wholesale prices on everything from drinks to flour, rice to burgers, and much more. To shop, go online and collect in store. Visit adamscashandcarry.co.uk today to start your savings spree. Craving authentic Desi flavors? Look no further than Desi Restaurant. From midday until 1 in the morning, enjoy our homemade specialties that will transport your taste buds. Indulge in tantalizing papri chaat and savor the rich Chersi Kadahi. Treat your friends to our fresh 1 kilogram Chersi lamb handi. Plus, get 2 12-inch pizzas for $11.95. Located at 298 Lincoln Road, we deliver from lunchtime until 1 a.m. Call 01733 555 795 now to order and experience Desi Restaurant's flavors. Salam Radio wishes all of our community Ramadan Mubarak. Ramadan is here. Ramadan is here. Ramadan is here. Ramadan is here with all our delight and pleasure of having a fantastic month of Ramadan. Alhamdulillah. Zoya, आप एक स्टोरी हमसे शेयर कर रही थी. क्या स्टोरी थी आप जरा बताएंगे सारे listeners को about this faith and belief? Yes. Yes. So last time I was telling my mom in bed, Mummy, I have a story to tell you. So someone in my class, 2 people, were in not feeling too good because they were fasting, and my teacher was eating an apple, and she felt a bit hungry, but she didn't tell me about that. And then we went to the choir area. So the choir area looks like, so it has green grass, then the 3G pitch. Well, it's not really a choir area because you have a football pitch there, but oh well, who cares? And and then there's some tables for choir area. So we went to the first table over here. So over here was the table, and then there was a next table here, and there was another table here, and another table here. And we went to this first table, and on the second उसके table. बाद क्या हुआ ज़ोया? फिर क्या हुआ? स्टोरी मुझे बताने देना. अच्छा हाँ ठीक है हाँ. मैं थोड़ा आप थोड़ा context इसको बना रही हैं. ठीक है right. Text. ठीक है. तो फिर second table पे बैठे हुए थे वो लोग, and then they were eating snacks. They were eating like, I don't know, Lunchables or like in front of the girl who was fasting. Yeah. Okay. So I had 2 people there, 2 of my friends. One of my friends went to sleep. She was tired. She woke up 6 o'clock, and then my this other student, because I was a good friend, and I came with them and I sat down, and then then those girls started eating, and then she felt like, I really feel hungry. These people on the second on the desk here, on the second table, they keep on eating behind, and I feel very, very hungry, and I feel so sick. And then I'm like,
do you want me to go tell them to stop turning around? Like, in a good way. In a good gesture, yeah. In a good gesture. Because it's actually, like, it's okay. But you sometimes have to have faith and belief in yourself. So I went to the table and said, hi, guys. Can you please not turn backwards? Because... my two friends on behind you, they're not really feeling well and they're fasting and they don't want to break their fast. Aww. And they were like, then I told this other girl, she was fasting as well, but she said to her other friends, she said, oh guys, don't turn around, these girls are fasting and they're really, really tired and they're really not feeling well and they're fasting, so just don't look around. You can eat there but facing this way, but except for facing behind you. And then I went back to the table and then I was just thinking and then I started to get tired too. So that was the story. So I asked my mum about that, and then my mum told me that sometimes you've just got to have faith in yourself, because when you have faith in yourself, you feel even better that I'm not being like, I want this, I'm being like something that's responsible. So like I'm acting like an adult because some adults fast because you have to fast because you're adult, but some people that are little, but that girl was really, really brave, and she didn't want to break her fast, and she stayed very, very brave. But I just told my mom, and she said, sometimes you just gotta have some faith in yourself, because when you don't have faith in yourself, you don't believe in yourself, and when you don't believe in yourself, you'll never believe in yourself in your whole entire life, and you won't live your life as secretly as you want it to be. So this is why you have faith and belief, and then you believe it and then achieve it. Faith in you, but the same in your religion. Faith that Allah subhanahu wa ta'ala has given you entire power, right? If you're not eating because of him, because he's going to give you blessings. Yeah. He's going to give you a reward because you're fasting for him, isn't it, Zoya? Yeah, and he's going to give you a reward because you are having faith. Because even though someone's eating next to you, say, I'm keeping a roza, I'm fasting, and then I don't know, my brother starts eating in front of me, and then he's like chewing on some lollipop stick and going yum yum yum, or then later on he's drinking some milk, or like 2 hours later he's drinking some water, 2 hours later he's eating some crisps. So? And then I need to have faith in myself because I know he's my brother, but if I didn't fast, I could have taken that crisp packet, could have taken half of his bar, I could have done anything. Or you could have taken all of his food from his mouth. Maybe. Maybe I do that. Right, so what I understand, in nitty-gritty, Zoya, the two things I understand what you're talking about. Number one, if you're telling other girls, and girls are respecting, who are eating, who are not fasting, but for other people, they're having so much respect. They're not eating in front of them, just not to make them feel like, the feel of hunger and thirst, isn't it? So that's the first thing, comes as a respect. And I'm really happy the girls did that. They just didn't turn up, because in the same way that the girls behind them, they're eating, they didn't want to give a sight of the girls food in front of them. Right. And the second thing is, even if somebody's eating in front of you, I know it's hard sometimes, but you know what? It's a faith. It's a strong belief that doesn't matter. If you have a monosilva, the fantastic food in front of you, the delicious food at the side, you're just making mouth delicious, bringing your mouth water. Like biryani. Water. Whenever I see biryani, whenever I see crisp, God, yeah. whenever I see. Yeah. Daddy, sponsor you. Yeah. Anda salan. Anda salan. Definitely anda salan. Okay. And then brown rice. Hashtag mummy. Thank you. And pasta. Hashtag my mum's mum. We are talking mama. food, not because of the Ramadan. We talk about after iftar or sahri time. So you can have all these lovely food during that time. So don't want to bring any mouth water because you believe in yourself. You believe and you have faith, okay? Sometimes The day when the sands of my slate is empty. Yes, sir. Sometimes I eat in front of my mum, and I feel kind of bad. Hello, mummy. Sorry. No, it's okay. I don't feel bad at all because I know. Because I know my sometimes I mum's have to raised. cook food for you guys, isn't it? Well, Sometimes she has to feed my brother as well. They're fasting, but they have to cook some food for kids. That's absolutely fine because mum or anybody who's fasting, they have firm belief in Allah subhanallah. They know that this doesn't make any difference for them. क्योंकि उनका अंदर का जो
जो एतमाद है, जो एक रोज़ी का जो ताकत है वो इतनी ज़्यादा होती है कि सारी फूड, सारी चीज़ें जो साइड डिलिशियस फूड साइड, दे आर लाइक यूजलेस, दे मेक नो इम्पैक्ट ऑन देयर हंगर एंड थर्स्ट बिकॉज दे नो दैट द रिवॉर्ड दे आर गोइंग टू गेट इज फार बेटर एंड बिगर एंड ग्रेटर than just a side of the food. The Eid celebration, shake a lot of hands, giving salutations. Salam alaikums, peace upon the nation. तो ये तो बात हो रही थी रोज़े की, रमज़ान करीम की, और हम सब इस महीने का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, तैयारियां करते हैं. और पता है क्या जोया, हमारे ट्रेडिशनल घर के अंदर बाकायदा समोसों की तैयारियां होती हैं ना. You know, it's like before Ramadan starts, they have got proper, they make roti, there's just the bread, they make it. Yeah, they make thin films of that. It's like a small strips they make it, and they just fill the stuff in it. They call samosas stuff. They have vegetables. They have got meat in it or chicken in it, whatever the flavor they like. Yeah, it. Chaval has chicken in it. Yeah. Not too fancy if you're fasting, but yeah. it's making me kind we're talking about food continuously. Yeah. Okay, so we're telling them what's happening. So this is a tradition. They are like making samosas, spring rolls ready, and because they want to do for iftar and sahar. Isn't it? Yeah. वो सब चीज़ तैयार करते हैं. कुछ लोगों में ये हमारे घर की तैयारियां हो रही होती हैं. And sometimes they're just buying some fruits, and like they're making some different recipes which are more energetic, like more energy drinks, less sugar. इस रमज़ान में I believe कि हम सब जानते होंगे, लेकिन जितना कोशिश करें कि have more fiber, more energy, less sugar, less acidic food intake, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो. है कि नहीं जोया? अच्छा, अब हम एक नशीद की तरफ बढ़ते हैं जो आपको बहुत पसंद है, और उसके बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे. خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملال الخلق في يوم المعاد فأنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي
حقق لي مرادي نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد And welcome back, all the listeners and viewers. Salam Radio 106, and you're listening and watching the show, Mum and Me Radio. Navigating the youth journey. بسمة تنور قلبك خلي الفرحة تضوي دربك. And the messages is adak or smile. Smile which gives during the month of Ramadan al-Kareem. اضحك مثل طفل بأول عمره. जी जोया, आप कुछ कह रही थी. तो रमज़ान के महीने में जो हम सेलिब्रेट करते हैं अफ्तारी और सहर, उसके अलावा भी हम लोग अफ्तार पार्टीज अटेंड करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, उनके घर जाते हैं. तो आप उसके बारे में कुछ अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हैं, बताइएगा. So, one thing especially to say, by the way, this nasheed is by Humud. Yes. And it is about smiling. Yeah. And the previous nasheed we played was for Ahmad Mukhtar. Yes. Yeah, Adaman. Yeah. Yeah. Good nasheed. And so, moving on next is about a nasheed part. Not a nasheed party. Long time ago. Iftar party. Iftar party. Okay. अब बात हो रही है फिर खाने की. अच्छा, आप बताएं अफ्तार पार्टीज के बारे में, क्या होती है ये अफ्तार पार्टी? So, I'm starting to get hungry, but believe in yourself. Believe and trust, yeah. Faith in yourself. Yeah, yeah. Okay, so I'm going to be facing this camera. Hello, guys. And so this iftar party I went to is about reading a dua. And अच्छा, ये आप बताना चाह रही हैं, कल आपने चले मैं बता दूं आपके बिहाफ से कि जोया ने कल अपनी फ्रेंड के घर जाके बड़ी अच्छी सी फर्स्ट इफ्तार पार्टी थी जोया की, राइट? जो जोया ने अटेंड की. समा इनकी फ्रेंड का नाम था, और समा की मम्मी नाहिद जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, फैंटास्टिक, अ वेरी वेरी लवली यंग presenter for the youth as a mum, a very hard working mother. नाहिद, आप जो कर रही हैं अपने बच्चों के लिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं, और आपने कल बहुत बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने अफ्तार पार्टी जो है सेलिब्रेट की. और मुझे लगता है कि इसका जिक्र ज़रूर होना चाहिए कि आपने दुआओं में सबको याद किया, अच्छी दुआ करवाई, और बहुत ही बच्चे जो है ख़ासकर जो सारे इन्वाइटेड थे वहाँ पर, उन्होंने बहुत इंजॉय किया. तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा आपकी तरह इस हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया. जोया भी कुछ कहना चाह रही हैं. जी जोया. Yes, so to the iftar party, my friend Summer, hashtag Summer, and Summer's mum, Baji Naeed. And Auntie Naeed. Auntie. Okay, yeah. I've got too many Bajis. Yeah. Don't blame me. Yeah, but she will be happy when you say call her Baji Naeed anyway. Don't worry. Sorry for my mistake. Yeah, okay, yeah. तो उसमें आपने क्या लर्न किया अफ्तार पार्टी में? Alright, so getting onto the real bit. So we learned about surahs, and when I first got in for the iftar party, my first iftar party, as soon as I went in, I knocked the door. Then I found out, I knocked the door again, my friends came, and then I went to meet everyone. And then when I went into the room, I saw people reading a Yasin book. Surah Yasin. Yeah, Surah Yasin. And when I saw them reading Surah Yasin,
I don't really know Surah Yasin, but my Sama and my other friend read Surah Yasin, but the rest didn't. But then we read on a tasbih. And so I read tasbih. All of them read tasbih. And we just read on a tasbih. Such a you know, bilkul. Sorry. Yeah. Carry on. Yeah. So we read on a tasbih, and then we did some nasheeds and we read some duas and stuff. We did a very long dua, and when we did the dua, it was really heart touching as well. It was about our kids, to give them good luck and to make sure they're okay when they grow up, and about more things. कितनी अच्छी बात है कि आपको ये सब याद है. यानी ये दुआ में इतनी तासीर थी, इतनी इफेक्टिवली पढ़ी गई थी कि you know कि what the dua was about, कि आपको उसका अंदाज याद है कि उसमें क्या क्या कहा गया, क्या क्या मांगा गया. और you, like you said, as a child, that it was touching your heart. So think about the moms who were sitting down there and the parents. Wonderful. अच्छा ज़ोया, बिल्कुल हम आगे जाते हैं, आपके एक्सपीरियंस को जो है शेयर करेंगे अपने तमाम लिसनर्स के साथ. और रमज़ान का महीना होता ही ऐसा है कि हम सब जो है वो अच्छी रौनकें बहाल करते हैं, दुआओं की, इबादत की, लोगों को बुलाते हैं, अफ्तार पार्टीज़ होती हैं जिसमें हम रोज़ा जो है अफ्तार करवाते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने लोग तमाम जानने वालों को. ये एक जेस्चर होता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं और हम अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार करते हैं. असल बात है अल्लाह ज़ुबान अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करना, उसकी उम्मत से, उसके लोगों से, उसके जो तमाम जो दुनिया में लोग मौजूद हैं, जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा हमें जो हिम्मत अफजाई की है हमारी, वो इस तरह से कि आपने इर्द गिर्द के लोगों की आप हिम्मत अफजाई कीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनको बुलाइए, उनसे बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, रोज़ा अफ्तार करवाइए और सवाब कमाइए. अल्लाह ताला ने दरवाज़े खोल दिए हैं इस रमज़ान करीम में, इस माह रमज़ान में, कि आप जितने अच्छे काम करते हैं उसका सवाब आपको बहुत अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है. और बात होती है कि आप रोज़े जो है कैसे रखते हैं. बच्चे जो है आजकल बड़े ही माशाल्लाह, जो यंग जो जनरेशन है वो बड़े ही हिम्मत रखती है और हिम्मत का मुजाहरा कर रही है कि वो रोज़े रखने के लिए तैयार हैं. तो मैं कह रही थी कि अगर आप रोज़ा बच्चों का प्लान करते हैं तो ज़ाहिर है बच्चों को पहले समझाएं, उसके हवाले से उनको तैयार करें. और यू कैन गिव अ प्रैक्टिस रोज़ा घर में जब वीकेंड्स पे हो, बिल्कुल उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाइए. और ये भी ध्यान में रखिए कि उनके लिए सेफ्टी हो, उनकी कोई मेडिकल कंडीशंस ना हो, हेल्थ इश्यूज़ ना हो, ये ना हो कि उनको फास्ट जो है वो ब्रेक करना पड़े. वो जो अच्छी मैं इसको नहीं कहूँगी कि कोई बुरी बात, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से, मेडिकल कंडीशन के हिसाब से अगर होता है तो ज़ाहिर करना पड़ेगा. लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ यू जस्ट कैरी ऑन, स्टार्ट एंड फिनिश इट प्रॉपर्ली, स्मूथली. तो उसके लिए अगर थोड़ी आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, उनको समझाएं, उसकी अहमियत का अंदाज़ा दें और देखें कि एज ग्रुप क्या है और वो उनकी बच्चों की एज ग्रुप के अलावा उनकी सहल कितनी है, उनकी पावर कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, उसको टेक करने की. मौसम अच्छा है, रमज़ान करीम जो है इस दफ़ा हम रोज़ा जल्दी अफ्तार कर लेते हैं, तकरीबन 10 या 10:06 जो टाइमिंग्स अब आ गए हैं. और इससे पहले सालों में, यानी कुछ पहले देखा जाए तो रमज़ान जो है अफ्तार हम बहुत लेट किया करते थे, 8:30, 9, 9:30 का टाइम भी हो जाया करता था. बट दिस इज़ फैंटास्टिक वेदर कि बच्चों को इंकरेजमेंट मिल सकती है यकीनन. तो हम पूछ रहे थे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा रोज़ों का, और जब आपने रोज़ा रखा तो पहली आपकी जो रोज़ा कुशाई थी या उम्र थी आपकी रोज़े के दौरान वो क्या थी, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. तो अगर चाहें तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं. वैसे बहुत कम वक्त हमारे पास बचता है अभी. तो ज़ोया आप जी कहिए. When was your first roza? That's my question. I think I was in year 6 जब मैंने पहला रोज़ा रखा, और मुझे अभी भी याद है उस वक्त जो है वो मेरी पेरेंट्स जैसे करते हैं कि रोज़ा कुशाई की गई, ख़ासकर सब लोगों को बुलाया गया कि भाई हमारी बेटी का पहला रोज़ा है. और उस वक्त मुझे प्यास बहुत लग रही थी. मैं सो भी रही थी तो मुझे पानी जो है वो ख्वाब में नज़र आ रहा था, बिकॉज दैट वाज वेरी हॉट वेदर. लेकिन Pakistan's very hot weather. Yes. And mummy, so when you were fasting, this is a question for you. When you were fasting, did you, before you had your first full fast, sorry, I'm a very ready nose today. When you had your first fast,
how was it? And how did you feel? And how can I explain this? So you like how did you have like half rosa? Did you ever feel sick anytime? Did you ever feel some issue with you? Yeah. So like I said, I got lots of because my parents been doing fasting in front of me like for a long. So I do have the courage from them. First thing first. When I had fast, it was a full fast, a proper fast. It's not a training fast. And I didn't open it in between, so I had a full, complete fasting, proper, and then I know that day I was very thirsty, but by the time I opened it, I drank lots of water, and I couldn't control drinking lots of water, and then I fell a little bit sick after that. But alhamdulillah, I went, and that gave me courage, to be honest, to continue a couple of more fasting during that day, during that month. So, and then the next month, the next year, I started doing all or most of. I don't remember most of the Ramadan and fasting and Som as well. I mean रोज़ा. So yes, बच्चों के लिए रोज़ा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर उनको सही ट्रेनिंग दी जाए, उनके पेरेंट्स उनको इनकरेज करें, और ज़्यादा अच्छा हो कि आप स्टार्ट जब करवाएं जब वो घर पर हों, वीकेंड्स पे हों, ताकि आप उन पर नज़र रख सकें वो ठीक हैं, they're not fainting, they're not feeling drowsy, or they're not they are health wise they're okay. Yeah. अच्छा जोया, क्या मैं आपसे कहना चाह रही थी, बड़ी ही अच्छी एक बात इस रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान का महीना रमज़ान आ गया है तो रमज़ान का महीना रमज़ान आ गया है। रमज़ान के महीने में इबादत लाजमी है, रोज़ा रखना एक इबादत है, लेकिन बाकी जो इबादत हैं जैसे नमाज़ पढ़ना और ज़कात देना, वो इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, इसका एक हिस्सा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या ही खूब हो कि हम अल्लाह ताला के इनायत से रोज़े भी रखें और तमाम इबादत भी सही तरीके से जो हैं वो अल्लाह ताला की खिदमत में पेश कर सकें, तरावी भी कर सकें, ज़कात भी दे सकें। कुछ लोग जो है वो काम में होते हैं मसरूफ़, और कुछ लोग अपने घर में बच्चों के साथ होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही आपको ताकत मिलती है, एक जज्बा मिलता है, और आपको ये इस बात का भी एहसास होता है कि अगर आपने इस महीने को सही तरीके से इबादत नहीं की, पेश नहीं किया अल्लाह ताला के सामने अपने आप को, तो हो सकता है कि आप रिग्रेट्स फील करें कि जब भी चला जाए, क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसे आता है और ऐसे जाता है, इट कम्स वेरी क्विकली एंड गोज़ वेरी क्विकली। या तो इस हवाले से सब लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ, और सबसे दुआ की इल्तिजा करती हूँ कि दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि रमज़ान का महीना हम सब के लिए बाइसे रहमत साबित हो। कर लो सभी तैयारी, ये रहमत लिए खड़ा है। और इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम का अख्ताम हुआ चाहता है। मैं और जोया आपसे इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट संडे इसी तरह से 3 से 4 के दरमियान बिटवीन 3 and 4 PM सलाम रेडियो 106.2 पे आपके साथ होंगे विद द शो मम एंड मी रेडियो। जोया कुछ कहेंगी, क्योंकि हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। Yes, so today I've had a very good day, and today I hope you a very Ramadan Kareem, and I hope you have youth, and I hope we have such a good day. इंशाअल्लाह ताला, और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इस काबिल हो जाएं और मुज़ाहरा करें हिम्मत का, और उनके पेरेंट्स भी उन्हें हिम्मत दें, और हमारे बच्चे जो है वो बाइस फ़ख्र हों, और रोज़ा इंशाअल्लाह ताला से रमज़ान करीम में रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हाफ़िज़। This azan is sponsored by Park Foods. Come and see the difference. Allahu Akbar.